हे गाइस, मेरा नाम डॉक्टर शरून है और आप सबको स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है नीट पढ़ी, जहां हम आप लोग के लिए डेली बायोलॉजी एमसीक्यूज लेके आते हैं और नीट प्रिपरेशन टिप्स एंड ट्रिक्स लाते हैं ताकि आप लोग के आने वाले नीट एग्जाम में थोड़ी सी प्रिपरेशन में हेल्प हो सके और ताकि आप लोग आने वाले नीट एग्जाम के क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली और विद स्पीड सॉल्व कर सकें। बट आज हम यहाँ पे कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। आप में से बहुत लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया है कि आई शुड रीस्टार्ट टेकिंग लेक्चर्स एंड स्टार्ट एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स टू यू अगेन। अब पूरे चैप्टर्स यहाँ पे कवर करना वुड बी बिट डिफिकल्ट, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दिस इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। हर चैप्टर से हम सारे के सारे डायग्राम्स आपको डिस्क्राइब करेंगे, सारे के सारे डायग्राम्स आपको समझाएंगे। NCERT के डायग्राम्स are very important and they cover a lot of aspects, lot of concepts of the book. So digestive system is going to be our first chapter जिसके सारे डायग्राम्स हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो थोड़ा सा डिटेल में बनेगा, थोड़ा सा लंबा बन सकता है, बट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको हर डायग्राम अच्छे से समझ आ जाएगा और उसके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ जाएंगे। एंड इफ दिस वीडियो becomes helpful to you all, then we will come up with more of these videos. First we'll cover entire human physiology and other videos will follow up covering different chapters and different units as well. So do comment in the comment section if you find this video helpful, and if you find it helpful, do share it with your friends as well. So without wasting much time, let's get started. So this is the first diagram of human digestive system and पूरा का पूरा human digestive system जो भी chapter में आप organs के बारे में पढ़ेंगे, glands के बारे में पढ़ेंगे, वो पूरा का पूरा इस एक diagram में बताया गया है। So starting from the anterior opening, the first part from where the digestive system starts, that is your mouth. So mouth is your anterior opening जहां से आपका digestive system start होगा. Just behind mouth, the cavity that is present where the food goes into once it enters the mouth is the ओरल कैविटी या बकल कैविटी भी कहते हैं। ओरल कैविटी, बकल कैविटी में ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है। वी हैव 3 पेयर्स ऑफ मेजर सलाइवरी ग्लैंड एंड दीज आर द पैरोटिड ग्लैंड, द सबमैक्सिलरी एंड द सबलिंगुअल, एंड द नेम टेल्स इट ऑल। सबलिंगुअल मतलब बिल्कुल टंग के नीचे, सबमैक्सिलरी मतलब जॉ के एंगल के पास ही होते हैं, और पैरोटिड मींस दे आर प्रेजेंट ऑन द cheeks. Then we have pharynx. Pharynx is the common passage for food and airway. Pharynx itself has 3 parts. That is your nasopharynx, your oropharynx, and your laryngopharynx, also called as hypopharynx, right? Laryngopharynx or hypopharynx. So the oropharynx part is the part which will continue into esophagus. Right, so the oropharynx part continues into the esophagus. Esophagus is nothing but it's a long tube that is connecting your buccal cavity or the oral cavity to stomach. Now stomach is a J-shaped balloon like structure which itself has 4 parts. आगे उसका डायग्राम भी आपको मैं दिखाऊंगा। Stomach is a balloon shaped structure जहां पे पूरा का पूरा food that you have taken in from your mouth reaches. Now stomach has lot many functions and it also has different types of muscular layers. Rugae, which is a modification of mucosa layer, is also present in stomach. And rugae का function क्या? It helps in the churning effect. So remember, stomach has many functions. One of those is the churning of the food. Secondly, it has HCl and it has pepsin. Pepsin has role in digestion of protein. HCl has function of activation of pepsin, plus there is an intrinsic factor as well over here. Intrinsic factor which helps in absorption of vitamin B12 is also present in stomach. So once the food comes to stomach, it stays there for about 2 to 3 hours, and then the food from the stomach goes to the duodenum. Now the small intestine is the part from where the food from stomach, the food goes to small intestine, and small intestine has 3 parts: the duodenum part, the jejunum part, and the ileum part. That's the last part. Fine. So the stomach and the duodenum, there is a sphincter that is present at this point which is known as the pyloric sphincter, and one sphincter that is guarding the opening of the esophagus to stomach, gastroesophageal sphincter.
Fine. So these two sphincters are guarding the opening and the exit of the stomach. So the food from stomach will go to the duodenum. Duodenum is a C-shaped or a U-shaped structure like this. This is the duodenum part, and then the duodenum continues as the jejunum, and finally through these coils the jejunum will form the ileum, and this ileum will open into the large intestine. The first part of large intestine into which the ileum opens is called as your cecum. Now cecum has two important things. One, it has vermiform appendix, which is a vestigial organ. Vestigial organ means in our human body right now there is no known function of vermiform appendix. It's a vestigial organ. So vermiform appendix is a finger-like blind projection from the cecum. Then the cecum continues as the ascending colon. So the large intestine can be divided into your cecum, then your colon, then your rectum. Fine. Colon has four parts. That is, first is your ascending, then is your transverse, then is your descending, and finally sigmoid. So those are the four parts of the colon. So we have the cecum. This cecum has a lot many microorganisms that play a very important role in human body. Fine. So the cecum continues as the ascending colon. This is the ascending colon part. Then the ascending colon forms the transverse colon. This is the transverse colon part, and then we have a descending colon, and finally we have a sigmoid colon. The sigmoid colon then gives rise to the rectum, and finally we have the posterior opening, the anus, through which the fecal matter are discharged. Over here we have two important flexures, one on the right side, one on the left side. So the right-sided flexure is known as the hepatic flexure. Why hepatic? Because liver is on the right side. And the left-sided flexure is known as the splenic flexure. Why splenic flexure? Because spleen is on the left side. And this opening is guarded by a valve which is known as what? Ileocecal valve. The opening of ileum into the cecum is guarded by a ileocecal valve. So that is the complete digestive system in a single diagram that has been explained to you guys. The next diagram is of human dentition, and these are the dentition of an adult teeth. What do we mean by adult teeth? It means the permanent dentition has been represented in this diagram, and the dental formula of adult is important. So what is the dental formula? 21-23 by 21-23. What does this 21-23 means? 21-23 represents the total number of teeth in one quadrant. So if this is the complete mouth, that is the hemiquadrant, and this is one quadrant. So this is one quadrant, this is one quadrant, this is one, and this is the fourth quadrant. So each quadrant has 21-23 teeth. So if you look at this diagram, if I draw this line in between the two quadrants, so this becomes your one quadrant, and each quadrant has two incisors, one canine, two premolars, and three molars, right? So that's the exact sequence of the dental formula, 21-23. To find out the total number of teeth, I said this is in one quadrant. Fine. So in four quadrants, obviously quadrant means one complete circle has been divided in four parts. So human have in their mouth four quadrants. So if we multiply each of these with 4, we get the total number of teeth. That comes 8 plus 4 plus 8 plus 12. That is 16 plus 4 plus 12. That comes as 32. So that's the human adult dentition. That is a very important, how the total number of teeth can be calculated from dental formula. That is an important part. Now what happens in children? So if it is asked what is the dentition of a temporary teeth or a milk teeth. So dentition of milk teeth, yeah, dental formula of milk teeth would be 2102. You need to remember this. 2102. What does 2102 means? It means that a milk teeth or a temporary teeth would have two incisors, they would have one canine, they would have 0 premolars, and they would have two
molars. That is, the third molar doesn't come as a primary teeth. So the remaining teeth come as primary teeth, but none of the premolars and the third molar never come as primary teeth. They come directly as a permanent teeth. That is the diagram, the third diagram of NCERT textbook, and this diagram represents the stomach. So that's the opening of the esophagus into the stomach, guarded by a sphincter over here. That is your gastroesophageal sphincter. Fine, gastroesophageal sphincter, and this is the opening of the duodenum, or rather the opening of the stomach into the duodenum, and this is guarded by another sphincter which is known as your pyloric sphincter. That is your pyloric sphincter. The entire stomach has been divided into four parts. The first part is the fundus, which is located above the level of the opening of the esophagus. The part that receives the food from the esophagus is the cardiac part. So remember, part that receives food, part of stomach that receives food. Obviously other part also receive the food, but that is the first part of stomach to receive food from esophagus. Then the main portion of the stomach is formed by the body, and the ending part, the last part, is the pyloric part, which opens into the small intestine, that is the duodenum. This diagram of NCERT textbook represents the layers of the alimentary canal, and these layers are present throughout the alimentary canal. Means from where the alimentary canal starts, that is from the mouth part. However, mouth is not having these layers, but from the esophagus part we can say, as we continue down, the esophagus, the stomach, and then the small intestine, large intestine till anus, all these four layers can be found. Now what does lumen means? Lumen is nothing but the cavity. So this cavity, so if you imagine a tube or a pipe, there is a cavity in between, right? And the surrounding walls are there. So lumen is nothing but the cavity of this pipe, that is the lumen. And in this cavity we have our food that is going to be digested. Fine. So lumen is nothing but the cavity. So as we move out from the lumen, fine. So as we move out from the lumen, the first layer that is encountered is the mucosa layer, and this is the most important layer because this is the layer which is coming in contact with the food and carrying out all the digestion process. Obviously muscular layer, submucosa layer, all these have their role to play in digestion as well, but the mucosa layer is one which has all the digestive glands. Mostly, exceptions are there. Most of the digestive glands are located in your mucosa. We have the digestive glands. Second thing in mucosa that comes is your absorption, like your villi. So all the villi, microvilli, these are modification of the mucosa that helps in absorption. Then we also have rugae present in the stomach. They are going to help in the churning effect. So mucosa also have villi and rugae. So that is an important part. Why mucosa is so much important? Because digestion is occurring because of mucosa. Glands are present, enzymes are released, and villi present over there is also helping in absorption, and rugae helping in churning effect of the food in the stomach. Then comes the submucosa layer. Remember, we are moving outside from lumen to outside. So then comes your submucosa layer. After the mucosa layer comes your submucosa layer. So the submucosa layer is made of loose connective tissue. Loose connective tissue means it has got everything that the muscles and the mucosa layer require for its survival. Means what do they require? They require blood vessels, they require nerves, all these things they are present in submucosa. So remember, submucosa, they are rich in blood vessels, they have nerves, they have lymphatic vessels, everything that will provide nutrition to the layers is present in submucosa. Plus submucosa of duodenum also has a gland also known as Brunner's gland. Now this has been asked multiple times. Brunner's gland is a gland that is not present in mucosa, it is present in submucosa. So after submucosa, as we move out, then comes the muscularis layer. The muscularis layer is made up of muscles. Now why do we require muscles in the alimentary tract? We require muscles because we have to carry out peristalsis, right? Peristalsis. What is peristalsis?
Peristalsis is the movement, the wave-like movement of the muscle because of which food is propelled forward. Food is propelled forward मतलब हम food को आगे तरफ push करते हैं. That is because of the peristalsis movement, and peristalsis movement occurs because of the muscularis layer. Now this is an important MCQ that comes over here. Inner layer of muscularis layer is circular and outer layer is longitudinal. So बाहर की तरफ जैसे हम मूव करें तो सबसे पहला लेयर जो हम एनकाउंटर करेंगे दैट इज द इनर लेयर, वो होगा हमारा सर्कुलरली ऑर्गेनाइज्ड मसल्स. मतलब हमारे सारे स्मूथ मसल्स हैं यहाँ पे, वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है, स्मूथ मसल्स है, बट मसल का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, क्या वो सर्कुलर अरेंजमेंट में है या वो लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट में. सो एज वी मूव आउट वी हैव इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर. याद कैसे रखना है, लॉन्गिट्यूडनल में LO आता है, फाइन, लॉन्गिट्यूडनल में LO. So longitudinal is outer layer. So you can remember with that mnemonic. And finally we have just the covering. Serosa is nothing but the covering. So कोई भी चीज को जब आप रैप करते हो वो सेरोसा हो जाती है. So बाहर की covering is nothing but your serosa. So just to remember the entire sequence I'm telling you again, बाहर अंदर से बाहर की तरफ मूव करेंगे तो सबसे अंदर वी हैव द ल्यूमेन, उसके बाद हमारा आता है म्यूकोसा, देन कम्स आवर सबम्यूकोसा, सबम्यूकोसा के बाद हमारा आएगा इनर सर्कुलर मसल लेयर, उसके बाद आता है आउटर लॉन्गिट्यूडनल, या जैसे मैं बताया लॉन्गिट्यूडनल का LO, O इज फॉर आउटर, एंड देन फाइनली वी हैव सबसे बाहर की कवरिंग दैट इज नथिंग बट सेरोसा. सो ये आपने याद रखना है कौन सा लेयर कहां पे आ रहा है. The next diagram shows a section of small intestine and the mucosal modification has been shown over here. So mucosa मैंने बताया रूगे बनाएगा स्टमक में, और small intestine में जाके विलाई, absorption के लिए विलाई बनाता है. तो ये डायग्राम आपको विलाई रिप्रेजेंट कर रहा है. फाइन, विलाई में एक चीज जो आपको मैं नोट करने को बोलूंगा, ये आ रहा है आपके क्रिप्ट्स. फाइन, these are the crypts. These crypts are nothing but crypts of Lieberkühn. Crypts of Lieberkühn NCERT टेक्स्ट में पढ़ा होगा. Crypts of Lieberkühn में हमारे पास intestinal glands present होते हैं. What are present? Intestinal glands. And what do these intestinal glands do? They secrete intestinal enzymes for the digestion. Fine. यहाँ पे एक और चीज जो नोट करने को मैं बोलूंगा आप लोग को, वो है lacteals. Now हमारे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में जो भी चीज हम डाइजेस्ट करेंगे, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो अमाइनो एसिड्स हो, जो भी चीज हम डाइजेस्ट करते, दे गेट एब्जॉर्ब्ड थ्रू द कैपिलरीज, दैट इज द आर्टरीज, दे आर कमिंग, दे सप्लाई द वेसल्स, दे सप्लाई द विलाई, और जैसे जैसे ये बाहर की तरफ जा रहे हैं, सो दिस इज द फ्लो ऑफ ब्लड जो मैं एरो से दिखा रहा हूँ. दिस इज द फ्लो ऑफ ब्लड दैट हैपेंस. सो जैसे जैसे आर्टरीज आती है, इनके पास न्यूट्रिएंट्स नहीं होती, यहाँ पे हमारे डाइजेस्ट हुई चीजें प्रेजेंट है, वो हमारे इंटेस्टाइनल सेल्स के आसपास आ रही है. सो आर्टरीज जो आ रही है ब्लड लेके, वो इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे और वेन्स वाले पार्ट के थ्रू बाहर चले जाएंगे न्यूट्रिएंट्स को लेके. ये सारे न्यूट्रिएंट्स ही होंगे एक्सेप्ट फॉर फैट. और फैट के लिए क्यों नहीं होगा? बिकॉज फैट इज नॉट वाटर सॉल्यूबल. बिकॉज फैट इज नॉट वाटर सॉल्यूबल, तो वो मेम्ब्रेन क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, और जब वो मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाएगा वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा. सो फैट एब्जॉर्ब होने का पूरा डिफरेंट प्रोसेस होता है, और उसके लिए वी हैव लैक्टियल्स. और लैक्टियल्स जो कि हमारा एक लिम्फेटिक वेसल है. रिमेंबर ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज लैक्टियल? इज इट अ वेन? इज इट अ आर्टरी? इज इट अ कैपिलरी? नो, ये सारी अलग अलग चीजें. लैक्टियल इज अ lymph vessel, lymphatic vessel, वो lymph carry कर रहा है. Fine, so remember about the lacteal over here. That's the sixth diagram of NCERT digestive system, and यहाँ पे glands represent किए गए. यहाँ पे इन्होंने liver नहीं represent किया, यहाँ पे इन्होंने salivary gland नहीं represent किया. So एक background knowledge आपको मैं दे दूं. salivary gland, जैसे कि हमने पहले diagram में discuss किया था, salivary gland they are 3 pairs. इनके डक्ट्स के नाम भी आप लोगों ने पढ़े होंगे अपने कोचिंग मटेरियल में, बट दोज आर नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग्स. सो 3 पेयर्स आपने इनके लोकेशन याद रखने. चीक्स में हमारे पास है पैरोटिड, राइट. देन वी हैव बिलो द टंग वी हैव सबलिंगुअल, एंड एट द जॉ एंगल, सो मैंडिबुलर एंगल. एट मैंडिबुलर एंगल we have what? We have our submandibular glands. Fine. So these are the 3 pairs of salivary glands that are located at different locations.
Then comes your liver. Now liver is the largest gland of the body. Remember this, largest gland. This question has been asked and people often get confused between two things over here. One is the largest gland, second is the largest organ. So remember, liver is the largest gland of human body. Largest organ is what? What is the largest organ? Right, largest organ is the skin. So remember, if the question asks what is the largest organ of human body, that is your skin. What is the largest gland? That is your liver. Now liver has lot many functions to carry out, like it helps in synthesis of different coagulation factors, blood clotting के लिए, glucose metabolism, बहुत सारे functions है liver के, and one of the functions of liver is to synthesize bile. ठीक है, so liver bile भी बनाता है, one of the function, not the only function, but it is one of the functions of liver. So liver bile भी बनाता है आपका. Now liver आप लोग को पता होगा दो lobes होते हैं. अगर यहाँ पे मैं liver बनाने की कोशिश करूं तो ऐसा कुछ liver बन के आएगा यहाँ पे इस डायग्राम में, और इस लिवर के दो लोब्स होंगे ऐसे करके. एक आपका लेफ्ट लोब होगा, एक आपका राइट लोब होगा. नाउ रिमेंबर, राइट लोब इज द मेजर लोब, काफी बड़ा लोब होता है. लेफ्ट लोब छोटा सा होता है. इट डजंट मीन लेफ्ट लोब डजंट हैज अ फंक्शन. ऑब्वियसली दोनों को काम करना है, बट लेफ्ट लोब से कंपैरेटिवली राइट लोब बड़ा होता है. नाउ दिस इज व्हाट द डायग्राम इज सेइंग, डक्ट्स ऑफ लिवर. सो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे दो डक्ट्स दिया है. नाउ दीज डक्ट्स फ्रॉम लिवर आर एक्चुअली कॉल्ड एज हेपैटिक डक्ट. फाइन, हेपैटिक डक्ट्स. लेफ्ट साइड से आ रहा है तो ये हो जाएगा हमारा, राइट साइड से आ रहा है तो ये हो जाएगा हमारा राइट हेपैटिक डक्ट. लेफ्ट साइड से आ रहा है तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हेपैटिक डक्ट. फाइन, डक्ट. सो RHD एंड LHD. अब ये RHD और LHD आगे जाके जुड़ रहे हैं. सो इफ यू सी एट द लुक एट दिस डायग्राम, दीज डक्ट्स आर ज्वाइनिंग टुगेदर. सो ज्वाइन होने के बाद ये एक कॉमन डक्ट बना रहे हैं, तो इसको बोलेंगे क्या? कॉमन हेपैटिक डक्ट. सो रिमेंबर, हेपैटिक मतलब कुछ भी चीज रिलेटेड टू लिवर, जैसे हेपेटाइटिस मतलब लिवर का इन्फ्लेमेशन. फाइन, सो हेपैटिक मतलब लिवर के साथ रिलेशन है. अब साइड में आपको गॉल ब्लैडर भी दिख रहा है. गॉल ब्लैडर को एज सच आप ग्लैंड नहीं बोलेंगे क्योंकि ये कोई सेक्रीट नहीं कर रहा, ये स्टोर करता है. सो लिवर ने जो भी बाइल बनाया वो गॉल ब्लैडर में जाएगा और गॉल ब्लैडर में स्टोरेज एंड कॉन्सेंट्रेशन होगा बाइल का. फाइन, बाइल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बाइल इंपॉर्टेंट है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट. रिमेंबर. फाइन, सो बाइल गया हमारा गॉल ब्लैडर में, वहां पे कॉन्सेंट्रेट हुआ. अब यहां पे आपको दिख रहा है ये डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर. सो डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर से जब हमारा फूड होगा डिओडिनम में, डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर से आपका बाइल सेक्रीशन स्टार्ट होगा, और जो हमारा हेपैटिक कॉमन हेपैटिक डक्ट बाइल लेके आ रहा था, थोड़ा सा गॉल ब्लैडर में जाएगा, थोड़ा सा आपका कॉमन बाइल डक्ट में आ जाएगा. So common bile duct. So what is common bile duct? It is the gallbladder duct plus it is the common hepatic duct. So remember this equation, common bile duct is combination of gallbladder duct and the common hepatic duct. Fine. अब ये common hepatic duct duodenum की तरफ जाएगा, लेकिन duodenum में पहुंचने से पहले ही यहाँ से एक pancreas का duct आ रहा है. So this is known as your pancreatic duct. पैनक्रियाटिक डक्ट इस कॉमन बाइल डक्ट को जोड़ लेगा, कॉमन बाइल डक्ट से जुड़ जाएगा. सो योर कॉमन बाइल डक्ट प्लस योर पैनक्रियाटिक डक्ट टुगेदर फॉर्म्स योर हेपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट एंड देन इट ओपन्स इनटू योर डिओडिनम. और यहां पे एक प्रेजेंट होता है आपका स्फिंक्टर विच इज नोन एज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई. रिमेंबर दैट अगेन, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, जो कि गार्ड करेगा इस हेपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग को. सो ये है आपका पूरा का पूरा डायग्राम ऑफ हेपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट ऑफ द डक्टल सिस्टम ऑफ द लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज. यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड्स मेंशन किए गए हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में. रिमेंबर, लिवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड एंड जॉन्डिस इज अ डिजीज ऑफ लिवर. दिस क्वेश्चन हैज अगेन बीन आस्क्ड, तो मैं आपको बता रहा हूँ. जॉन्डिस इज अ डिजीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. इट इज नॉट अ डिजीज ऑफ स्किन और आई. हाँ, जॉन्डिस में होता क्या है? We see sclera, that is the white part of your eye, it becomes yellowish. Fine, sclera becomes yellowish in jaundice. And what happens to your skin? Skin also becomes yellowish in jaundice, but that is not the disease of skin and eye. Jaundice is a disease of digestive system. Remember that. Jaundice में yellowish होती क्यों है? क्योंकि आपका bile pigments जो है वो collect होना start हो जाता है. So symptom आपका eye और skin में आता है.
So the symptom comes in eye and skin, but it is a disease of digestive system. So those were all the diagrams of human physiology, digestive system chapter. If you find this video helpful, do let us know in the comment section, and if you want more of such videos, do share your views in the comment section. We'll bring the next chapter of the series, that is respiratory system, all the diagrams of respiratory system, very soon. So that would be all for right now. I'll see you guys again in the evening with our daily biology MCQ series. Till then, all the best and keep working hard. Do like and share this video if you find it helpful, and don't forget to subscribe to this channel if you're new out there. Thank you guys for watching. Bye bye.